Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here are students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is linguistics and I'm gonna tell you about the very important topic is linguistics, definition, nature and scope in one video. Before starting this video guys, a good news for you. मेरे चैनल पे लिटरेचर की वीडियोस के साथ साथ आपको डेली इंग्लिश वीडियो भी मिला करेंगे जिससे आप अपनी वोकैबुलरी को अच्छा बना सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन बेहतर कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं. तो प्लीज़ उन शॉर्ट वीडियोस को भी वॉच किया करें, लाइक किया करें एंड शेयर किया करें. वेलकम टू ज़ैनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स. Please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. And video अच्छी लगे तो please press the like button and share my video with your friends. Zani Study Instruments Literature in Pakistan. Now I'm gonna start the topic. If you need another topic, please tell me in the comment box. Now I'm gonna start the topic. Linguistics. Linguistic, definition, nature and scope. Linguistics. Definition, nature and scope. Linguistic refers to the scientific study of language. Linguistic को ज़बान की scientific study भी कहा जाता है. The word linguistic is derived from the Latin words lingua meaning tongue. Linguistic लातीनी ज़बान के लफ्ज़ link जिसका मानी है ज़बान और istic meaning knowledge और istic जिसका मानी है knowledge से माखूज़ किया गया है. According to Cambridge Dictionary, linguistic refers to the scientific study of the structure and development of language in general or the particular language. Linguistic को हम language की development और उसके structure को scientific study भी कहा जाता है और particular language और general दोनों लैंग्वेज में उनकी डेवलपमेंट और उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी साइंटिफिक स्टडी कहलाती है. डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज. सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स आर एज अंडर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, linguistics is concerned with the nature of human language. Linguistic इंसानी ज़बान की नेचर के साथ कंसर्न करती है. How it is learned, कैसे वो लर्न करती है. What part it plays in the life of the individual and the community. और community और individual ज़िंदगी में कौन सा इसका हिस्सा individually और community में किरदार अपना अदा करता है, कैसे प्ले करता है. सेकेंड, ये एस पिट कॉर्डर के मुताबिक थी. सेकेंड, लिंग्विस्टिक ट्राइज टू आंसर टू बेसिक क्वेश्चंस. लिंग्विस्टिक दो बुनियादी सवालात के जवाबात चाहती है. फर्स्ट, व्हाट इज लैंग्वेज. सेकेंड, हाउ डज लैंग्वेज वर्क. पहली कि ज़बान क्या है और दूसरा कि लैंग्वेज यानी ज़बान किस तरह काम करती है. जीन एटकिंसन. Third, the scientific study of human language is called linguistics. साइंटिफिक स्टडी इंसानी ज़बान की साइंटिफिक स्टडी लिंग्विस्टिक कहलाती है. विक्टोरिया ए फ्रॉमकिन. लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. लिंग्विस्टिक साइंटिफिक स्टडी है ज़बान की. बाय दिस वी मीन लैंग्वेज इन जनरल, नॉट इन पर्टिकुलर लैंग्वेज. और इससे मुराद हम ये है कि लैंग्वेज जो जनरल लैंग्वेज है वो, ना कि पार्टिकुलर. इफ़ वी वर कंसर्न विद स्टडिंग एन इंडिविजुअल लैंग्वेज, अगर हम स्टडिंग में इंडिविजुअल लैंग्वेज को के साथ कंसर्न करते हैं, वी वुड से आई एम स्टडिंग फ्रेंच और इंग्लिश, तो फिर हम कहेंगे कि मैं फ्रेंच और इंग्लिश स्टडी करती हूँ या करता हूँ. और विच एवर लैंग्वेज वी हैपन टू बी स्टडिंग, और कौन सी लैंग्वेज मैं स्टडी कर रहा हूँ. बट लिंग्विस्टिक डज नॉट स्टडी एन इंडिविजुअल लैंग्वेज. लेकिन लिंग्विस्टिक नहीं स्टडी करता इंडिविजुअल लैंग्वेज को. इट स्टडीज लैंग्वेज इन जनरल. ये सिर्फ ज़बान को स्टडी करता है, वो भी जनरल में. The scope of linguistic. Linguistic involves a vast, complex and systematic study with different core areas such as phonology, phonetics, morphology, syntax and semantics. Linguistic बहुत ही vast, पेचीदा और सिस्टमेटिक स्टडी है जो बहुत मुख्तलिफ किस्म के कोर एरियाज पर मुश्तमिल है, जैसे कि फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स. इट इज आल्सो इंटरट्वेन्ड विद वेरियस अदर डिसिप्लिन्स एंड कंटेन्स फील्ड्स लाइक सोशल लिंग्विस्टिक्स, physiolinguistic, psycholinguistic, etc.
اور یہ بہت سارے مختلف ڈسپلائنس پر بھی مشتمل ہے اور فیلڈس پر بھی مشتمل ہے، جیسے کہ سوشل لنگوسٹک اور سائیکو لنگوسٹک ایکسیٹرا. لنگوسٹک از اے ڈسکرپٹیو اسٹڈی ناٹ اے پرسپیکٹیو ون. لنگوسٹک ایک ڈسکرپٹیو اسٹڈی ہے، نہ کہ پرسپیکٹیو، اینڈ ڈسکرائبس لینگویج ان آل اسپیکٹس، اور لینگویج کو ڈسکرائب کرتی ہے اس کے تمام پہلوؤں میں. اٹ از اے سبجیکٹ دیٹ کیپس چینجنگ. یہ ایک سبجیکٹ ہے جو چینج کرتا ہے ایز اے لینگویج چینج، جیسے کہ لینگویج چینج. اٹ از ویری ڈائنامک ڈومین آف اسٹڈی، اور یہ بہت ڈائنامک ڈومین ہے اسٹڈی کا. لنگوسٹکس از اپلائیڈ ٹو ڈفرنٹ فیلڈس آف اسٹڈی اینڈ دس میکس اٹ اے ویری امپورٹنٹ ڈسپلائن. لنگوسٹک بہت مختلف قسم کے اسٹڈی کے جو فیلڈس ہیں ان پہ اپلائیڈ کی جاتی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ڈسپلن ہے. The application of linguistics extends from anthropology to speech therapy in modern medicine. Application جو ہے linguistic کی وہ extend کی جاتی ہے anthropology میں، جیسے کہ modern medicine میں therapy. Nature of linguistic. Linguistic is concerned with the nature of language and communication. Linguistic concern کرتی ہے language کی اور communication کی nature کے ساتھ. It deals both with the study of particular language اور یہ deal کرتی ہے both particular language میں and the search for general properties common to all language. جیسے کہ تمام لینگویج میں common properties ہوتی ہیں جنرل طور پر، ان کے ساتھ بھی کنسرن کرتی ہے. It includes the following sub areas. For example, it includes the following sub areas: phonetics, the study of the production; phonology, the patterning of sounds; morphology, the structure of word; syntax, the structure of sentences; semantics, the pragmatic language is context. It also includes exploration into the nature of language variation, such as dialects, language change over time, how language is processed and stored in brain, and how it is acquired by young children. Language میں variations nature کی exploration includes ہوتی ہیں، اور language کیسے ایک ٹائم میں change ہوتی ہے اور کیسے یہ process کرتی ہے اور کیسے یہ brain میں stored ہوتی ہے، اور young children کیسے اسے acquired کرتے ہیں. All of these topics are examined in the coursework offered by the University of Arizona's Department of Linguistics. اور یہ سارے ٹاپکس ایگزامائنڈ طور پر کورس ورک آفر کیے گئے ہیں یونیورسٹی آف ایریزوناز ڈپارٹمنٹ آف لنگوسٹک میں. گائز یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک لنگوسٹکس، نیچر، ڈیفینیشن اینڈ اسکوپ. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز پریس دا لائک بٹن اینڈ شیئر مائی ویڈیو ود یور فرینڈز. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.